अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। This is Qari Qasim Ilmi from Al-Furqan Hakeem Academy, लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। My dear students, my dear viewers and my dear respected teachers, आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ जो लोग कहते हैं कि हम इंग्लिश में कैसे पढ़ाएं। तो आज मैं इंग्लिश में पढ़ाने का तरीका भी बता रहा हूँ, और दूसरा मुझसे जो क्वेश्चन किया गया है बहुत मर्तबा, वो ये है कि हम ज़बर, ज़ेर और पेश को कैसे पढ़ाएंगे। यानी मुराद ये है कि उसको हम फ़ता, कसरा और दुम्मा कैसे उनको पढ़ाएंगे इंग्लिश में। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ में ज़बर, ज़ेर, पेश को भी आपको बताऊंगा। याद रखिए, इस वीडियो के अंदर ज़बर को फ़ता कहते हैं, ज़ेर को कसरा कहते हैं और पेश को दुम्मा कहते हैं, और डबल ज़बर को फ़ता तैन कहते हैं, डबल ज़ेर को कसरा तैन कहते हैं और डबल पेश को दुम्मा तैन कहते हैं। और इंग्लिश में कैसे पढ़ाएंगे? सिंगल ज़बर को ज़बर, ज़ेर, पेश कहेंगे, डबल ज़बर, डबल ज़ेर और डबल पेश। अब बात आ गई स्टैंडिंग ज़बर। स्टैंडिंग ज़बर को, खड़ी ज़बर को हम यानी कि स्टैंडिंग फ़ता, स्टैंडिंग कसरा और स्टैंडिंग पेश, जिसको उल्टा पेश कहते हैं उर्दू में, ठीक है। तो ये तीन तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं इंग्लिश में, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर आए तो मेरे चैनल को अल फुरकान हकीम एकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हो सके तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप और फेसबुक पर लाजमी शेयर कीजिएगा। शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। तो फिर चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो आपको मैं स्पेल आउट करके बताऊंगा, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रेट, जिसे कहते हैं रवां, ठीक है। स्पेल आउट का मतलब है हिज्जे करके, जोड़ करके पढ़ना, उसको कहते हैं। तो प्रिसाइज करके मैं आपको बता दूं कि ज़बर, ज़ेर और पेश को, ज़बर को फ़ता, ज़ेर को कसरा और पेश को दम्मा कहते हैं। डबल ज़बर को फ़ता तैन कहते हैं, डबल ज़ेर को कसरा तैन कहते हैं और डबल पेश को दम्मा तैन कहते हैं। खड़ी ज़बर को, जिसको इंग्लिश में स्टैंडिंग ज़बर कहते हैं, और स्टैंडिंग फ़ता, स्टैंडिंग कसरा, स्टैंडिंग दम्मा, उल्टा पेश, खड़ी पेश, ठीक है। उसको हम ऐसे पढ़ेंगे। और ये आपको अगर बात समझ आ गई है तो मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाने जा रहा हूं। ओके, सो लेट्स गो ऑन नेक्स्ट स्क्रीन फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स। ओके, चलें जी, लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is Qaf. It is a heavy letter. There were 7 bold letters, huruf musta'aliya letters, and in every state we will read them boldly, heavily, strongly, deeply, with full mouth. This is the Zaba, and we call it also Fatah. This is the Qaf, Zabar, Alif, Qa. This is Fatah. This is Qaf, Fatah, Alif, Qa. Lam Zabar La, Lam Fatah La. Qala. You will stretch a little bit here because this is a Alif Madda here. This is the Alif Madda in green color, okay? Because when there is a Zabar before Alif, there is a Zabar before Alif, and Alif become Madda letters. And I told you in previous lesson there were 3 Madda letters: Alif Madda, Waw Madda and
Ya madda. So this is the alif madda here. This is Sad, Azir, Sqi. Do spell out. Do spell out mean हिज्जे करे जोड़ करे. Okay, हिज्जे करे जोड़ करे. So do spell out. This is Sad. It is also huruf musaliya letter. Sad, Azir, Sqi, Ra, Zabar, Alif, Ra, Ta, Zabar, Ta, Sirata. Sad, Kasra, Sqi, Ra, Fata, Alif, Ra, Ta, Fata, Ta, Sirata. You will stretch a little bit because there is the alif madda here. Sad and Ta, they both are heavy letters, strong letter, huruf musta'aliya letters, khossa, dagtin, qib. Ha, this is ha, khadi zabar, ha. This is standing fatah, ha. This is zal, zabar, alif, za, zal, fatah, alif, za, ha, za. Okay, this madda letter is equivalent to standing zabar, standing zer and standing pesh. Ha, ra. Next, zal khadi zabar, ra. Zal standing zabar, ra. Zal standing fatah, ra. Lam zer li, lam kasra li. Kaf zabar ka, Ka fatah ka. Ralika. Ralika. You will read this ra very softly. Very softly. Ralika. This is Kaf Zabar Alif Ka. Kaf fatah Alif Ka. This is the Alif madda here. Noon Pesh Wow. Nu. This is the Wow madda here. When there is a pesh before waw sakina become waw madda. No, you will stretch a little bit. No, okay. No, dhamma, waw, no, ka, no. Next, qaf, zabar, alif, qa, qaf, fatah, alif, qa, lam, pesh, waw, lu. Lam doma wow lu qa lu. Okay, next, lam zabar la, lam fatah la, ha ulta pesh hu, ha standing pesh hu, ha standing doma hu. Lahu, you will stretch a little bit. This is sin zabar wow. Saw. This in the sa sound will connect with the waw sakina because this waw has a jazm sign over there, and the jazm sign means link sign, connecting sign, connecting sign, joining sign, joining sign, joining sign, link sign, connecting sign. Okay, so this sin zabar sa will connect with the waw sakina. This is the waw lean, and they were two lean letters when there is the zabar before waw sakina and ya sakina. When there is a zabar before waw sakina and ya sakina, they both become lean letters. We will read them very softly. Saw, saw. Please repeat after me. Saw, fa zabar fa, fa fatah fa. Saw, fa. Saw, fa. Yes, this fa is the lips letters. They were four lips letters. Waw, fa, ba and mim. They were four lips letters. Qaw, lun. Qaf zabar wa qaw. Lam two pesh lun. Qaf fatah wa qaw. Lam dhamma tan. Lun. Qaw, lun. MashaAllah. Okay, please read. Fa, zer, fi,
Fi sound will connect with ya sakina because this is the ya madda here. You will stretch a little bit. Fi and ha zir he. Fi he. Fa kasra ya. Fi ha kasra he. Fi he. Noon pesh wow. Noon doma wow. No ha zir ya. He hazir he. No he he. Noon doma wow. No ha kasra ya. He ha kasra he. No he he. B ba zir B ha khadi zir he. Ba kasra B ha standing zir he. Bihi. Lam zabar ya lay sin zabar sa lay sa. Lam fata ya lay sin fata sa lay sa. Ba zabar ya bay noon zabar na. Ba fata ya bay noon zabar na. Bay na. Ain zabar a dal zabar alif dha. Adha. Ba tu zabar ban. Adhaban. Okay, when you spell out, okay, we will not read this alif. When we are reading with the spell out, we will skip alif and ya in tanween. Adhaban. You will read adhaban. Ain fata a dal fata alif dha. Adha ba fa fata tan ban. Adhaban. Mim zabar ma ta zabar alif ta mata. Ain tu zabar an mata an. Mim fata mata fata alif ta mata. Ain fata tan an mata an. To zabar to ghain standing zabar gha. To fata to ghain standing fata gha. To gha. And we will skip this ya because it is an empty letter, okay, motionless letter, because there is no any moments. Moments mean zabar zir pesh, okay, we call them moments. So this is the empty letter, we will skip it, but we can write down but not read. It is the silent letter. In English a word a listen, T is a silent, okay, and we don't read a listen. Please listen to me, my dear friend, okay, it is wrong, and the correct is that please listen to me, my dear friend. Listen, T is a silent, okay, and ya is silent here. Sheen zabar sha, kaf pesh waw ku, ratu zabar run, shakuran. Sheen fata sha, kaf duma waw ku, ra fata tan run, shakuran. Inshallah, I hope so you will like this video, and if you like, then please and share it as much as you can, okay, on Instagram, Twitter, LinkedIn, WhatsApp and Facebook. And may Allah keep you always happy and succeed you in deen, dunya and akhirah. Thank you very much for watching. Allah Hafiz.